session is regarding the overview of water resources sector in India, where we will discuss on the various statistics related to the water availability, the water demand in India, and the various issues and challenges that are being faced. Uh, I think somebody's mic is on. I again request you all to please turn off your mics. मिस्टर स्वप्निल प्रजापति, आपका माइक ऑन है, प्लीज माइक ऑफ कीजिए अपना। सॉरी सर। प्लीज अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग कि आप सभी लोग अपना माइक ऑफ रखेंगे। और कई बार ऐसा होता है कि बीच में मीटिंग जो है अपने से आप लॉग आउट कर जाते हैं, तो दोबारा से जब ज्वाइन करते हैं तो आपका माइक जो है वो इन डिफॉल्ट मोड जो है ऑन रहता है। तो आई रिक्वेस्ट कि जैसे ही आप रीज्वाइन करते हैं मीटिंग, तो सबसे पहले अपना माइक ऑन कीजिए ताकि कोई डिस्टरबेंस बाकी पार्टिसिपेंट्स को उसके चलते ना हो। ठीक है, तो our first session is overview of water resources sector. Then in the second session, we will be discussing about the roles and functions of the ministry, the Department of Water Resources, and Central Water Commission in particular. So I hope with this we can start with our first session. Let me just upload my screen, just share my screen and upload the presentation. Please let me know if you are able to see the presentation. Yes, sir. I hope it's visible to all of you. Visible. So for the first session, which is on the overview of water resources sector of India, just one more announcement, please, to all of you. Regarding any questions that comes to your mind. So since we are interacting in an online mode, so it will be very difficult to engage in interaction direct one-to-one in the middle of the session. So I request all of you to please note down your queries, whatever queries you have, so that we can take all the queries at once at the end of the session. Otherwise, in online mode, sometimes it gets very difficult and a lot of time gets wasted on such queries. So I request all of you to please just note down your queries, and in the end, when I finish my session, then I will give you 5 to 10 minutes so you can ask your queries at that time. Okay, so we start with our session. In this session, we will be seeing the various statistics related to the water resources sector in India. First of all, I would like to start with the global scenario of water resources. As you all are aware of, आप सभी को जैसे मालूम ही होगा कि हमारी धरती का जो है most of the part is covered by water. Earth's surface का almost 75% is covered by water. So it's a huge quantity of water available to us. But is it that all of this quantity is usable? Actually, it's not the scenario. As you can see in this image I have on the screen, although our 75% Earth surface is water, but most of it, the 97% of it is actually salt water, which is saline water, which is full of salts, high concentrated salts, so which cannot be put to use directly. You cannot use it for drinking purpose directly without any treatment. And whatever treatments are there, those are actually not feasible or environmentally very harmful. So as in a way, you can say that this 97%, which is the salt water, is actually not utilizable for our requirements. Remaining part, which is a 3%, which is actually fresh water, which can be used, but out of this 3% also, less than 1% is actually drinkable fresh water. So although there is 3% fresh water, but not all of it is available to us in a directly drinkable form. Maybe it may be that most part of it is in a frozen state, stored in the polar ice caps in the North Pole or the Antarctica glaciers. So there you cannot have that water directly for consumption purpose. So it is actually very less water in quantitative terms that is available to us, which can be put to use directly. So now moving over from global scenario to the India scenario, in India, we can see that we have almost 2.4% of the geographical area, the global geographical area. And we have almost 18% of the global population and also similar population of the livestock.
And we know that for the sustenance of this population, the livestock and the human population, water is a very important natural resource that we require. Water is used in daily, in almost every activity of humans and animals. They need water for drinking purposes, for their food requirements, for growing the food you need water, then for running the industries you need water. So water is required for everyone and in almost all of the activities. And to feed these many of population of human and also livestock, you need huge quantity of water. But when you come to the water resources in India, we have a share of only 4% of global freshwater resources. So you can see that there's a huge skewness in the availability in the terms of the population that we have of the global 18% population we have, but on the availability of water resources side, we can see that we have only 4% of the freshwater resources of the world. Now there's another unique feature of the precipitation that India receives. Let me just mention it that the whatever water resources that we are using in India, we can use in India, we get it in the terms of precipitation. So the precipitation is the only part, uh, only source of the water resources which is actually available to us, which can be used by us. This precipitation itself goes, some part of it goes, infiltrates into the groundwater, and there from there it is also used as a form of groundwater. And also the part of which runs in the form of rivers, we are able to generate our requirements from these rivers by developing certain projects on these rivers, which can be used for then development of hydropower or meeting our irrigation or drinking water needs or such other requirements. So precipitation is the source. So when it comes to the precipitation, there is a very unique feature that India faces, which is the spatial and temporal variation of this precipitation. As you can see on your screens, on the left, we have the map of India where the variation has been shown in the terms of space. So you can see the dark blue color, that is the northeastern part of India, and the Western Ghats. These two areas are shown in dark blue to light blue color. So these are the regions in India which receive the maximum amount of rainfall. However, there are certain other regions as well, such as the desert area of Rajasthan, the Kutch area of Gujarat, or you can say the regions. These are the regions which receive less rainfall, relatively less rainfall than the other places are receiving in India. So these places have below average rainfall, and the other regions such as the northeast and western Ghats, which are shown in blue color, they have above average rainfall. So if you imagine a vertical line dividing India from north to south, you can say that the eastern part of India receives fairly larger amount of rainfall than the western part of India, with the exception, of course, of the Western Ghats. So you can say that we have you can divide the entire country into the uh, uh, monsoon surplus region, which is the half side, eastern half side, and the monsoon deficit region, which is the western half side. So this is known as the spatial variation of precipitation. That is the variation in the space. Then to the right side, we have a graph which depicts the temporal variation, that is the variation with respect to time. Here we have shown the precipitation for various months, the average precipitation being observed for various months. So we have here the precipitation for all the 12 months, and we can see it during our monsoon months, which are the June, July, August, September. These are the 4 months which receive the maximum amount of the precipitation. Almost 70%, 70 to 75% of our average of our annual rainfall occurs during these monsoon months. In the table below, you can see that our annual rainfall is somewhere in the range of 1180 mm, out of which the rainfall that we receive in the monsoon months is almost 80, nearly 80%, that is 890 mm. And also the maximum rainfall that we are receiving is in Meghalaya, the Mawsynram, where it has been recorded the maximum precipitation of 11,000 mm, that is 11 meters of annual rainfall.
Whereas when we say about the minimum, we say that we have a minimum of 100 rainfall in the desert area of Western Rajasthan. So this is the two spatial and temporal variation of precipitation, which is a unique hydrological feature that we see in India. Then certain issues that we are facing is attributed to population, which is over, it is written 1.3, but in fact we are more than 1.4 billion, and we have already overtaken China as the most populous country in the world. So growing population and is still growing. There are no signs of it being stabilizing in the near future. So the requirements of these people, the human population, as well as the uh, the animal population, the requirement of water resources is ever increasing. So these requirement, the water resources requirement in the future also, these are going to increase because of the increase in population. Then we have, due to the high economic growth, as you all know, that we are in a phase where we are growing economically, we are growing, and we have our industries coming up, various industries, and for running these industries and for maintaining the economy, we do need water supply for keep these industries running for the industrial development of the nation. So there also, as a result, we have huge requirement of water in the future. Then, of course, the rapid urbanization, which causes the lot of human movement. The human settlement gets concentrated into the urban regions of India, and as such, we have a shortage of water supply in these urban centers. Resultantly, you can see the cases of Delhi, Mumbai, such uh, 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 cities with high population. There, you can see that we are facing a lot of issues related to the water supply. And also the growing urbanization also leads to the increase, the better lifestyle which people prefer to live. And there also, as a result of the more luxurious lifestyle, people tend to use more quantity of water than they can survive on. So these all result in the huge requirement of water. Then we have the rainfall, the spatial temporal, which we have already seen in the previous slide. These are also the important factors which are creating a lot of issue for us. And then the climate change, the effects of climate change. This is above all the other aspects that we have seen so far. So those aspects coupled with the impact of climate change, we can say that our water resources scenario is facing a lot of issue at present, and also it is seen that in the future these issues are going to become more severe. So when we say the impact of climate change, we can say it in the terms of the increased frequency of the floods. That is the more amount of rainfall occurring in shorter spans, shorter duration of span. Also the increased frequency of droughts. So floods and droughts. Droughts means less rainfall. There's no rainfall for the food to grow or for the people to survive upon, or the floods, where you receive the more amount of rainfall than the which may be required in a short span of time. So these two features gets aggravated. These two impacts of nature gets enhanced. Their intensity may increase or their frequency may increase due to the impact of this climate change. And due to the climate change, there is also a global rise in the temperature. The global temperature is rising, and as a result, the glaciers are receding. There is a snow melt in the Antarctica or the polar ice caps, and resultantly, the sea level is rising, which is causing the sea level to rise. And as the sea level rises, certain coastal cities or even the countries which are at an elevation which is not very much above the mean sea level, all those cities and all those countries are at a danger. So if there is a rise in the sea water level, we are seeing that the countries such as the Bangladesh, our neighboring country, is very risk prone due to this rise in the sea level. So all these impacts are because of the climate change. Along with this, if the sea level increases, there is one more
one more issue of the salinity intrusion into the coastal aquifers. The coastal groundwater aquifers are there. Those aquifers are prone to salinity intrusion because if the sea level rises, then as you know, sea water is a saline water, and if that level rises, so that saline water will intrude into the groundwater aquifers of the coastal cities. So those groundwater aquifers will also become saline, and that water will again be of no use to human or animal consumption. So these are certain impacts of climate change. Then there is one more important aspect related to the water resources of India, which is the interstate river water disputes. This you must have heard, all of you must have heard in the newspapers, in the social media, that there are issues between the neighboring states, certain states who are sharing a common river or a common river basin, as we say in technical terms. So to the left of my screen, you can see the map of India. The map which is not divided on the basis of the political lines, not on the basis of the state boundaries, but these are the river basin boundaries. The largest one, the yellow color you can see, which is the Ganga River Basin, which is titled 2A. So as you can see, the Ganga River Basin, there are so many states which are party states to this river basin. Right from the starting of Uttarakhand, Himachal Pradesh, Haryana, Delhi, Uttar Pradesh, Rajasthan, Madhya Pradesh, Bihar, Jharkhand, West Bengal. So all these states are the basin states of Ganga Basin. So when it comes to the sharing of the water of Ganga River, or which state takes away how much share of the Ganga water, there are usually disputes among the states. And it is a common phenomena which has been seen over the past so many years in India. It wasn't there long ago when the water was in sufficient quantity, the population was less, the per capita availability of water was high. There were no issues, but in the recent years, you can say the last 50, 60 years, we have seen lot many disputes between the states coming up due to the increasing population or due to the increase in demand for water. And as these rivers uh, are interstate rivers, or these basins are interstate basins, there are issues between the states, between the party states. So we have got interstate river water dispute tribunals as well in India, the tribunals which are set up by the government of India to adjudicate or to decide on the allocation of the water of these interstate basins. Then we can see that we have an issue of the river water quality. Uh, these sites which you are seeing on the screen must be very common to all of you. These are nothing new. And these are caused mainly because of the ignorance on the part of people, lack of civic sense, or illiteracy, or maybe poverty, or maybe traditional practices. All these aspects lead to such river water quality. Below down the screen, you can see the drains, the open drains directly uh, uh, ejecting all the discharge, the sewage discharge directly into the rivers without any treatment. So all these things lead to a declining river water quality. And if we compare it in a global scale, so at present we do not have any indicator to compare the countries on the basis of river water quality, like what is the quality of river water in the countries. But here is an indicator which somehow relates or somehow gives us a comparative view, though not directly on the river water quality, but the drinking water quality which the population of a country is receiving, or the sanitation services a country has. So EPI is an indicator. It is in full form. It is known as Environmental Performance Indicator Index, and it has been developed by World Economic Forum, and it has been globally accepted. So in this, the EPI of 2024, when it came out, it gave the following result, the map which is available on your screen. The lower the EPI score as it goes towards zero,
That means the lower the quality of the water or sanitation that country has. So India, you can see in that graph, India is being shown in the dark red color. So uh, when I went through the rankings of the country, I found that the India ranks out of 179 countries, India ranks at 139 in this parameter. And also EPI is not only an indicator for water and sanitation. EPI generally takes into account a lot many parameters as well apart from water. Actually, it is totally a total of 56 different parameters. Alongside water, it also measures the air quality index, the greenhouse gases emission, the waste disposal system. After taking all these parameters into account, it generates the EPI, the Environmental Performance Index. And for all those parameters, when it came out, the EPI for 2024, India ranked out of 179 countries, India ranked 175. So, and particularly when we saw the water and sanitation, it was a little better. India was at 139 out of 179. So overall, you can say that the water quality that we have in the country, it's not very good when compared globally. And as you all have seen, you all have experienced near you or wherever you are posted at or wherever is your native place, you must have seen the water bodies that we have in our vicinity are not usually very clean. Then moving on to the groundwater aspect, uh, we in India, as you can see in the graph above here, till 1960, India had a decent extraction of groundwater. This is a graph which is showing the groundwater extraction, that is the groundwater which is being extracted by various countries in the world over the time scale. So till 1960, India had a decent extraction rate uh, compared to other countries. But since 1960, the extractions by India of groundwater increased commendably. So in 1960, as you all know, that India witnessed a green revolution because at that time, we had the huge requirements of food grains. So to meet that requirement of food grains, India introduced certain high-yielding variety of seeds in the 1960 and which ushered in the green revolution for India. So these high-yielding variety of seeds, these seeds required huge quantity of water. And the water at that time, the government provided facility for irrigation water, which was the government canals. They were not established to the extent that they could meet the requirement of each and every farm or each and every farmer. So the farmer, they turned towards the groundwater. They installed the hand pumps, the irrigation wells in their farms, and they extracted the groundwater. And because of that, since 1960, India's groundwater extraction, it boomed. So now, when you look at the present scenario, India is world's largest user of groundwater. India is the largest extractor of groundwater in the world, which accounts for almost one third of the groundwater extraction. And also it is more than the combined extraction by USA and China. So the United States and China, the groundwater which they are extracting, India is extracting more than combined of US and China. So a situation is a bit worrisome in the groundwater scenario as well. Now, when we look at the water availability in quantitative terms, like how much water is available to us, so CWC carries out this study on reassessment of water availability basin-wise. The various basins which I just showed you in the interstate water issue slide. So for each of those basins, CWC examines it carries out the study, usually through the remote sensing mode in through the satellite imageries, and it arrives on the total amount of water which is available in each of the basin. So when you combine for all the basins in India, you get the overall the water availability which is present for the entire country. So the report of CWC, which was released in 2024, last year only,
It showed that the total precipitation that India receives on an average every year is 3,729 BCM. The graph to the left of your screen. 3729 BCM. BCM is a huge quantity. So if you want to visualize it, like BCM is also equivalent to kilometer cube. So think of a cube with all sides equal and all sides measuring 1 kilometer. So a cube of 1 kilometer length, 1 kilometer breadth, and 1 kilometer height, and you fill it with water. So this is 1 BCM. So when you take 3,729 of such cubes, that much is the total amount of water which is available uh, to us for utilization. So this is the total precipitation which is being received by a country, 3,729 BCM. But out of it, we have seen that most of the precipitation is lost majorly because of the evapotranspiration. Evapotranspiration is the evaporation which is occurring from the water body or the ground surface, and also it combines evaporation with the transpiration. Transpiration is that part of the water which is lost by the plants in the process of making food for itself, for its growth. So the evaporation and the transpiration, when these two terms are combined together, we call it as evapotranspiration. So out of the total precipitation of 3,729 BCM, a major part of it is lost because of the evapotranspiration. And the left part is 2,116 BCM, which is known as the water resources potential, which can be utilized for consumption by India. But even this 2,116 BCM is not entirely utilizable. This is the potential. It can be utilized, but it is not utilizable. Maybe with the advent of technology or with the coming up of new schemes, we can able to achieve this 2116 BCM. But currently, our utilizable water resources lie only about 1126 BCM. 1126 is the actually what we can utilize at present. And out of this 1126, currently we are actually utilizing only 695 BCM. And this is including both surface and groundwater. This is not a separate, this is including surface. Out of 695, almost 450, more than 450 BCM is the surface water consumption, and almost 250 BCM is the groundwater consumption. Now, when you see the graph to the right side of the screen, it shows the demand. On the left side of the left side of the screen, the graph showed us the availability of water, but now we have to compare it with the demand. It may be that the demand is less than the availability, so there is no issue. But the demand graph shows us a separate opposing view. The demand shows us that in the year 2010, our overall demand for water resources was 710 BCM, which is only going to increase. And in the 2050, it is projected that our demand will be about 1180 BCM. The majority part of this demand goes to meet the demand for irrigation sector. The irrigation sector demand has been highlighted in this graph also. You can see the 2010, we had 78% of the overall water demand was for the irrigation sector. And it reduced in percentage terms, it's reducing, but in absolute terms, in quantity wise, it's only increasing. So you can say by 2015, though we will be having 68% demand for irrigation water in irrigation sector, but it is a 68% of 1180 BCM. So in absolute terms, the irrigation sector demand is also increasing. Now, when we say by 2050 that we are projecting to have a demand of 1180 BCM, but from the left side of the left graph, we have seen that the utilizable water resources is only 1126 BCM. So we have 1126 BCM to fulfill the requirement, but our requirements are going to be 1180 BCM. So you can say that by 2050, our country will not be having the required
quantity of utilizable water resources to meet the demand of the entire nation. If the things goes in the present scenario, अगर ऐसे ही चलता रहा जैसे आज के डेट में हम लोग पानी यूज कर रहे हैं, तो बाय 2050 इट इज प्रोजेक्टेड कि हम लोग जो है अपनी रिक्वायरमेंट जो है वो फुलफिल नहीं कर पाएंगे जितने वाटर हमारे पास अवेलेबल है. Then there is a term called per capita water availability. We have seen, हमने देखा कि water availability on the national scale कि एक साल में हमारे पास ओवरऑल कितना पानी अवेलेबल है. लेकिन वी हैव टू कंपेयर इट ऑन द पर कैपिटा बेसिस बिकॉज हमें पॉपुलेशन को फीड करना है. सो एक कंट्री के पास कितना पानी है ये अपने आप में सब सारा सिचुएशन नहीं बयां करता है जब तक कि आप उसको कंपेयर नहीं करते हैं कि उस कंट्री की पॉपुलेशन कितनी है. मे बी कि किसी कंट्री के पास अवेलेबिलिटी कम है वाटर रिसोर्सेज की लेकिन उसकी पॉपुलेशन और भी ज़्यादा कम है, तो उसके लिए उस कंट्री के लिए हो सकता है कि उतना कम पानी भी सफिशिएंट पड़े. लेकिन इंडिया के साथ ये सिचुएशन नहीं है. जैसे आपको पता है इंडिया इज़ द मोस्ट पॉपुलस कंट्री और हमारी वाटर रिसोर्सेज अवेलेबिलिटी भी कम है, तो उसके चलते हमारी पर कैपिटा वाटर अवेलेबिलिटी तो और भी ज़्यादा कम है. हम लोग इस ग्राफ में देखते हैं कि हमारी पर कैपिटा वाटर अवेलेबिलिटी पर पर्सन एनुअल कितना पानी अवेलेबल है. तो 1951 में हमारी पर कैपिटा वाटर अवेलेबिलिटी थी 5177 मीटर क्यूब. इसको अगर आप लीटर्स की टर्म्स में देखना चाहें तो एक मीटर क्यूब में 1000 लीटर्स होते हैं. तो 51 लाख लीटर्स आप बोल सकते हैं एक पर पर्सन के लिए वाटर अवेलेबल था कंट्री में पूरे साल के लिए. दिस इज फॉर द एंटायर ईयर. एक साल में एक पर्सन के लिए 51 लाख 77,000 लीटर्स ऑफ वाटर वाज अवेलेबल इन द ईयर 1951. लेकिन सिंस देन वी हैव सीन अ डिक्लाइनिंग ट्रेंड which is majorly because of the rising population as well, that now in 2025 we are at a level of 1340 annual per capita water availability. And this is a cause of concern for us because here you can see two indicators, the water stress line indicator and water scarcity line indicator. The horizontal lines running through the graph. The above line जो वाटर स्ट्रेस लाइन है जो 1700 क्यूबिक मीटर पर पर्सन पर ईयर पे फिक्स की गई है, और जो वाटर स्कारसिटी लाइन है जो 1000 क्यूबिक मीटर पर पर्सन पर ईयर पे फिक्स की गई है. ये दोनों ही इंडिकेटर्स जो हैं वो फाल्कन मार्क इंडिकेटर के नाम से जाने जाते हैं. एक स्वीडिश हाइड्रोजियोलॉजिस्ट रहे हैं फाल्कन मार्क, तो उनके द्वारा दिए गए इंडिकेटर्स हैं, ग्लोबली एक्सेप्टेड हैं. तो इसको जब हम फाल्कन मार्क इंडिकेटर के दायरे में देखते हैं तो हम लोगों को पता लगता है कि हमारे कंट्री की जो वाटर अवेलेबिलिटी है इस टाइम पे पर कैपिटा वाटर अवेलेबिलिटी जो है वो वाटर स्ट्रेस कंट्री में हम लोग गिने जाते हैं. और अगर ये पर कैपिटा वाटर अवेलेबिलिटी 1000 क्यूबिक मीटर पर पर्सन पर ईयर से भी कम हो जाती है देन वी विल बी काउंटेड अमंग दी वाटर स्कार्स कंट्रीज. So currently we are in the region, we are in the water stress region, we are water stress country. But in the future, as you can see in the 2050, हमारी per capita water availability और भी कम हो जाएगी. And it is projected कि future में जो है हम लोग water stress, water scarce country में जो है शामिल हो जाएंगे. So again a troublesome situation for India to face और हमें जल्दी ही मतलब कुछ इनिशिएटिव लेने होंगे. और मैं कहूँगा कि गवर्नमेंट जो है वो प्रयास कर भी रही है, काफ़ी इनिशिएटिव्स काफ़ी सब कुछ किया जा रहा है इस एरिया में ताकि हमारी फ्यूचर की जो है वाटर रिक्वायरमेंट जो है पूरी की जा सके. उनके बारे में हम अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम में आगे भी जानेंगे बाकी सब. तो बाय 2050 जब हम अपनी वाटर डिमांड देखते हैं तो आप पता है कि हमारी डिमांड जो है 1180 BCM रहेगी टू 2050 में. इट इज जस्ट अ प्रोजेक्शन, इट मे फेल, but currently it is projected that we will be having this amount of water demand. Out of this, 807 BCM will be the irrigation demand, which will be accounting almost 68% of the total demand. And about 10% will be the drinking water demand, 7% industry demand, then 6% energy demand, and 9% other sectors. And when we talk about the food grain demand by 2050, the food grain demand itself is going to increase because the population is increasing.
सो बाय 2020 में हम लोगों का फूड ग्रेन प्रोडक्शन 300 मिलियन मेट्रिक टन था, जो कि ऑलमोस्ट 50% इंक्रीज करने की आशंका है 2050 तक, जहां पर हमारा फूड ग्रेन डिमांड जो है 450 मिलियन मेट्रिक टन हो जाएगा। और इरी और जैसे ये फूड ग्रेन की डिमांड बढ़ेगी, इतना ज़्यादा क्रॉप प्रोड्यूस करने के लिए हमारी जो है इरिगेशन की डिमांड भी उसी हिसाब से बढ़ेगी। तो इसलिए हम लोग के जो फ्यूचर की जो डिमांड है, फूड फूड डिमांड हो गई या फिर चाहे वाटर डिमांड होगी, ये दोनों ही हम लोगों की बढ़ेंगी। और ये फूड डिमांड बढ़ेगी तो ये वाटर डिमांड को भी जो है ऑटोमेटिकली बढ़ाएगी, क्योंकि आपको फूड पैदा करने के लिए, ग्रो करने के लिए जो है पानी चाहिए होता है। अब हम थोड़ी बात इरिगेशन सेक्टर की करेंगे, क्योंकि आप सबको भी बताया मैंने कि इरिगेशन सेक्टर ही वो सेक्टर है जहाँ पर हमारा मैक्सिमम जो पानी है कंट्री का वो कंज्यूम हो रहा है। तो इरिगेशन सेक्टर में क्या चैलेंजेस हैं ये आप सबको पता होना ज़रूरी है। तो हमारा, अगर हम इस में देखें लेफ्ट साइड वाले ग्राफ में अगर हम देखते हैं, तो हमें पता लगता है कि हमारे पास जो है इंडिया में वन ऑलमोस्ट 140 मिलियन हेक्टेयर जो है ग्रोस इरिगेशन पोटेंशियल है। आई एक्सपेक्ट कि आप सभी लोगों ने सिविल इंजीनियरिंग की है, तो आप सभी लोग जो है इरिगेशन पोटेंशियल टर्म से जो है वो वाकिफ होंगे। नहीं है तो एक बार थोड़ा मैं रिमाइंड करा देता हूँ आप सभी को कि इरिगेशन पोटेंशियल एक्चुअल में होता क्या है। हमारा कोई भी इरिगेशन प्रोजेक्ट जो होता है वो कोई एक सर्टेन अमाउंट ऑफ कमांड एरिया के लिए डेवलप किया जाता है। कमांड एरिया जिसको कि आपका प्रोजेक्ट जो है पानी सप्लाई करेगा, विच द एरिया विच विल बी एक्चुअली इरिगेटेड फ्रॉम द प्रोजेक्ट। सपोज कि आपका हमारे यहाँ पर जो है इंडिया में दो मेजरली ग्रोइंग सीजन होते हैं, राबी सीजन होता है, देन खरीफ सीजन होता है। तो अगर मान लीजिए आप सेम प्रोजेक्ट से अगर 100 हेक्टेयर ऑफ एरिया जो है आप खारिफ सीजन में इरिगेट कर रहे हैं, एंड 50 हेक्टेयर ऑफ एरिया जो है राबी सीजन में इरिगेट कर रहे हैं, तो उस प्रोजेक्ट की आपकी टोटल इरिगेशन पोटेंशियल जो है वो 100 हेक्टेयर प्लस 50 हेक्टेयर, दैट इज 150 हेक्टेयर जो है वो उस प्रोजेक्ट की इरिगेशन पोटेंशियल होगी, इरिगेशन पोटेंशियल क्रिएटेड। एक टर्म आती है फिर इरिगेशन पोटेंशियल यूटिलाइज्ड। एक्चुअली इरिगेशन पोटेंशियल आपने क्रिएट किया, आपने प्रोजेक्ट अपना डिजाइन किया, 100 हेक्टेयर खारीफ, 50 हेक्टेयर इन राबी, टोटल 150 हेक्टेयर के लिए आपने इरिगेशन पोटेंशियल क्रिएट करने के लिए प्रोजेक्ट डिजाइन किया। पर एक्चुअली जब प्रोजेक्ट कमीशन होता है, जब प्रोजेक्ट से पानी की सप्लाई होती है, तो आपका पूरा जो एरिया है 150 हेक्टेयर उसको पानी नहीं मिल पाता है। तो 150 में से एक्चुअली कितना एरिया को पानी मिला, इट मे बी स्लाइटली लेस देन दैट, इट विल बी लेस देन दैट। तो उस एरिया को जो है एक्चुअल में जो इरिगेट हुआ है उसको इरिगेशन पोटेंशियल यूटिलाइज कहा जाता है। तो आई होप कि सभी लोगों को है इरिगेशन पोटेंशियल क्रिएटेड एंड यूटिलाइज्ड में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। तो हमारे कंट्री में जो है इरिगेशन पोटेंशियल जो है 140 मिलियन हेक्टेयर है, और जो हम लोग अभी तक अचीव कर पाए हैं, इरिगेशन पोटेंशियल क्रिएट कर पाए हैं, वो है 112 मिलियन हेक्टेयर। और उस 112 में से भी जो है इरिगेशन पोटेंशियल जो यूटिलाइज हो रहा है, द ग्रोस इरिगेशन एट प्रेजेंट जो किया जा रहा है वो है ओनली 98 मिलियन हेक्टेयर। सो इसके चलते हमारे इरिगेशन सेक्टर में कुछ इश्यूज हैं, जो आपकी राइट साइड स्क्रीन पे पॉइंट आउट भी किए गए हैं, जो कि एक गैप इन इरिगेशन पोटेंशियल क्रिएटेड एंड यूटिलाइज्ड। इट इज ऑलमोस्ट 15% का गैप है। यानी कि आपने प्रोजेक्ट बनाया, उसमें इन्वेस्टमेंट पूरा आपका लगाया, और जिस एरिया को इरिगेट करने के लिए वो प्रोजेक्ट डिजाइन किया गया था, वो एरिया जो है कंप्लीटली इरिगेट नहीं हो पा रहा है, उसमें 15% एरिया जो है उस तक पानी नहीं पहुंच रहा है। तो ये जो गैप है, ये 15% आपका इरिगेशन जो है पानी नहीं पहुंच रहा है, इसके कारण जो है आपका जो क्रॉप है उसको डैमेज पहुंचता है। क्रॉप के पास जब कोई रिलायबल सोर्स ऑफ इरिगेशन नहीं रहता है, तो ऐसे में क्रॉप डैमेज होता है, क्रॉप प्रोडक्टिविटी कम होती है, लैंड प्रोडक्टिविटी कम होती है। सेकंड इशू हमारा आ जाता है इसमें लो वाटर यूज एफिशिएंसी का। हमारा इरिगेशन सेक्टर इंडिया में जो रहा है, ट्रेडिशनली हम लोग फ्लडिंग इरिगेशन प्रैक्टिस करते रहे हैं, जिसमें जो है पानी को आप अपने फार्म में जो है किसान जो है वो खुला पानी छोड़ देते हैं, जो स्टैंडिंग वाटर जैसे पैडी क्रॉप को चाहिए होता है वैसे छोड़ देते हैं। और उस केस में क्या होता है कि हम लोगों के लॉसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि आपने पानी अगर ओपन छोड़ दिया खेत में, तो इवेपोरेशन आपके बहुत ज़्यादा होंगे, या फिर सरफेस से रन ऑफ हो जाएगा आपका पानी।
तो ऐसे लॉसेस जो हैं वो सब काउंट फॉर करते हुए देखा गया कि हमने एक्चुअली में जो एफिशिएंसी से जो हमने पानी यूज किया है वो एफिशिएंसी केवल 36% ही है। ओनली 36% वाटर। डैम से आपका पानी रिलीज हुआ, उसके बाद क्रॉप ने कितना एक्चुअल में पानी यूटिलाइज किया उसमें से, वो 36% ही एक्चुअली में नापा गया है। तो ये एक और हमारे लिए जो है ये चिंताजनक बात है। देन आती है हमारी लो वैल्यूज ऑफ प्रोडक्टिविटी। जो पानी हम लोग पैडी के लिए हम लोग देते हैं पूरे उसकी लाइफ साइकिल में, जो पैडी की ग्रोथ के लिए जो एक पूरी लाइफ साइकिल होती है, उसमें 980 हम लोग पानी अप्लाई करते हैं पैडी को, जबकि जो फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है उसका एस्टिमेट है कि हम लोगों के कि 450 से 700 पानी जो है वो सफिशिएंट है। उतना पानी जो है अगर आपको पैडी को देना है थ्रू आउट इट्स क्रॉप साइकिल, तो वो सफिशिएंट है 450 से 700 तो हम लोग ज़रूरत से ज़्यादा जो है पानी इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे कि हमारी जो है प्रोडक्टिविटी जो है वाटर प्रोडक्टिविटी, हम लोग सेम अमाउंट ऑफ क्रॉप ग्रो करने के लिए शायद ज़्यादा पानी यूज़ कर रहे हैं। दूसरा आता है हमारा पैडी का प्रोड्यूस, विच इज़ नोन एज लैंड प्रोडक्टिविटी। हमारी लैंड प्रोडक्टिविटी जो है वो 3.6 टन पर हेक्टेयर ही है। मतलब हम 1 हेक्टेयर अगर पैडी ग्रो करते हैं तो उसमें से हमें 3.6 टन का ही प्रोड्यूस मिलता है, जबकि जो वर्ल्ड एवरेज है वो 4.5 टन पर हेक्टेयर है। सो यू कैन सी कि हम लोग सेम अमाउंट ऑफ लैंड में से जो है कम प्रोड्यूस पैदा कर रहे हैं। ऑल्सो हम लोग सेम अमाउंट ऑफ वाटर में जो है कम प्रोड्यूस पैदा कर रहे हैं, या फिर सेम प्रोड्यूस के लिए हम लोग ज़्यादा क्वांटिटी ऑफ वाटर यूज़ कर रहे हैं। इरिगेशन के लिए पानी क्यों जरूरी है, ये शायद बताने की जरूरत आप लोगों को नहीं होगी, लेकिन एक स्टैटिस्टिक्स इसमें ये भी है कि जिस एरिया में आपका एश्योर्ड इरिगेशन सप्लाई होती है, जिस फार्म के पास कैनाल का इरिगेशन एश्योर्ड उसको समय से पानी मिलता है, उस फार्म की जो क्रॉप प्रोडक्टिविटी है वो ऑलमोस्ट डबल देखी गई है उन फार्म के बजाय जो केवल की रेनफॉल पर ही निर्धारित है पूरी तरीके से। इसलिए बोलते हैं कि इरिगेटेड प्रोड्यूस है, इरिगेटेड क्रॉप प्रोड्यूस है, वो ऑलमोस्ट ट्वाइस होता है रेनफेड प्रोड्यूस का। इसलिए हमें ज़रूरत है कि जो भी हमारा एरिया जहाँ तक इरिगेशन नहीं पहुँचाया गया है अभी तक, उस एरिया को इरिगेशन में कवर किया जाए। इसलिए जो लेफ्ट साइड वाला ग्राफ था इसमें जो हमारा पोटेंशियल है, इरिगेशन पोटेंशियल, वो 140 मिलियन हेक्टेयर है, जो हमने अभी तक पूरा अचीव नहीं किया है, हमने केवल 112 ही क्रिएट कर पाए हैं। तो सबसे पहले हमें ज़रूरत है कि हम 112 को बढ़ा करके 140 मिलियन हेक्टेयर तक पहुँचे। हम जितना भी एरिया हम लोग इरिगेट कर सकते हैं उसको इरिगेट करें। देन हमारा जो यूटिलाइजेशन इरिगेशन पोटेंशियल है जो करंटली 98 मिलियन हेक्टेयर है, उसको भी बढ़ाने की हम लोग कोशिश करें, स्टेप्स लें, ताकि उसको हम बढ़ा करके एटलीस्ट जो इरिगेशन पोटेंशियल क्रिएटेड है उसके नज़दीक ले जा पाए, जितना नज़दीक हो सकता है। देन हमें बात करनी चाहिए थोड़ी डैम स्टोरेज से रिलेटेड भी, क्योंकि डैम्स जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं जब बात आती है क्लाइमेट चेंज की। क्लाइमेट चेंज के बल चलते, जैसे मैंने आपको बताया कि हम लोग जो है इंटेंस एंड फ्रीक्वेंट फ्लड एंड ड्रॉट की कंडीशन फेस करते हैं। तो डैम्स जो जिनके पास स्टोरेज रहता है, अच्छा खासा रिजर्वायर स्टोरेज रहता है, ये डैम्स हमें मदद करते हैं ऐसे ड्राई स्पेल से निपटने के लिए। क्योंकि जब हमारे पास मान लीजिए कोई साल में हमारे पास अच्छी रेनफॉल होती है तो हम उस रेनफॉल को जो है अपने डैम में स्टोर करके रखते हैं। एंड देन सब्सिक्वेंटली मान लीजिए नेक्स्ट 2 2 3 इयर्स हमारे पास रेनफॉल नहीं आती है, हमारे पास ड्राई स्पेल ऑफ मानसून जाता है हमारा, तो उस टाइम पे हमारे पास जो ऑलरेडी स्टोर्ड वाटर है डैम में, उसको यूज कर करके हम अपना जो है ड्राई स्पेल की रिक्वायरमेंट जो है मीट कर सकते हैं। तो इसलिए डैम्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कुछ बड़े कंट्रीज जो ग्लोबली जिनके डैम स्टोरेज ज़्यादा है, क्वांटिटी में ज़्यादा है, वो मैंने इस ग्राफ में डाले हैं। जैसे आप देख सकते हैं बाकी सब कंट्रीज के मुकाबले दीज आर दी मेजर प्लेयर्स इन द वर्ल्ड जिनके पास मेजर डैम स्ट्रक्चर्स हैं। So you can see the leading is a Canada with 841 BCM of the dam storage, followed by China with 830 BCM, and India is somewhere behind. We have got 247 BCM. Though it is not very far behind, it is a significant quantity when you see it in absolute terms. But when we see it in the perspective and when we compare it with the per capita dam storage, because again we have to see it in the
वी हैव टू कंसीडर द पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री व्हेन वी आर लुकिंग एट द डैम स्टोरेज। तो डैम स्टोरेज पर कैपिटा की जब बात आती है तो इंडिया जो है बहुत पीछे है यहाँ पर लिस्ट में। आप इस ग्राफ में देख सकते हैं कि कनाडा कहीं आगे है बाकी देशों के मुकाबले भी, पर इंडिया इस लिस्ट में जो है इट इज वेरी नेग्लिजिबल। वी आर एट ओनली 175.81 BCM पर पर्सन। इतना ही हमारे पास डैम स्टोरेज है। तो इसलिए हमें ज़रूरत है कि हम लोग अपनी डैम स्टोरेज कैपेसिटी को जो बढ़ाएं। जो प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं हम लोग, वैसे तो अ, आज के टाइम पे एक नए प्रोजेक्ट बनाना, नए डैम स्टोरेज, बिग स्टोरेज प्रोजेक्ट्स बनाना बहुत मुश्किल हो चुका है, क्योंकि जो भी इजीली फिजिबल साइट्स थी हम लोगों की, वो हम लोग ऑलरेडी एनकैच कर चुके हैं उनको, वहां पर हम लोग डैम बना चुके हैं। कुछ टफ साइट्स हैं, जैसे नॉर्थ ईस्ट में हमारे पास काफ़ी पोटेंशियल है अभी, और वो उसको टैप करने की कोशिश भी की जा रही है। कोई ब्रह्मपुत्र एंड बराक बेसिन जो है उसमें ह्यूज क्वांटिटी ऑफ वाटर जो है हमारा, हम यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं, एंड विच गोज टू द लोअर राइपेरियन कंट्री सच एज बांग्लादेश। तो ऐसे रीजन्स में भी जो टफ साइट्स हैं हमारी, उनको जो है हमें आइडेंटिफाई करना होगा, हमें नए प्रोजेक्ट्स वहाँ पे बनाने के लिए प्रयास करना होगा। इवन जो एनवायरमेंटलिस्ट के कंसर्न्स है, रिसेंट टाइम्स में आप लोगों ने भी सुना होगा कि कोई भी स्टोरेज प्रोजेक्ट बनाने से पहले वहाँ के एनवायरमेंटलिस्ट जो है वो काफ़ी एक्टिव हो जाते हैं वहाँ पर, कि एनवायरनमेंट को क्या नुकसान होगा, या फिर वहाँ की जो लोकल जो विलेजर्स हैं वहाँ के, जिनके घर डूब जाएंगे तो उनके लिए क्या होगा। तो ये सब जो आपके इश्यूज आएंगे, इन सब को जो है वो काउंट फॉर करते हुए, इनको इनको केटर करते हुए आपको आगे बढ़ना है। कैसे आप लोग रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं, अच्छे पैकेजेस प्रोवाइड कर सकते हैं वहाँ पे लोकल जो प्रोजेक्ट अफेक्टेड फैमिलीज होती हैं, उनको कैसे आप लोग संतुष्ट कर सकते हैं कि वो जो है प्रोजेक्ट के कंस्ट्रक्शन के बीच कुछ मतलब ज़्यादा अड़चन ना बने, या फिर उनकी जो है सहमति आप लोगों को मिल पाए। तो ये सब जो है इश्यूज जो डैम कंस्ट्रक्शन के अराउंड जो है इन्वॉल्व, इन सब को भी जो है इनको भी टैकल करना होगा। और ये सब हमारे वाटर रिसोर्सेज जो सिक्योरिटी है हम लोगों के लिए, अगर हमें अपना फ्यूचर वाटर रिसोर्स सिक्योर करना है तो हमें ये सब चैलेंजेस जो है बीट आउट करने होंगे। सो इस सेशन के लिए थैंक यू सो मच। दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर दिस सेशन। नाउ आई ओपन द प्लेटफॉर्म फॉर ऑल। अगर किसी को क्वेरी कोई पूछनी है तो प्लीज़ आप लोग पूछ सकते हैं। अभी हम लोगों के पास 4-5 मिनट का समय है। उसके बाद हम लोग सेकंड सेशन शुरू करेंगे 11:30 बजे से। हाफ एन आवर का ब्रेक रहेगा 11 बजे से 11:30 बजे तक। उसके बाद हम लोग सेकंड सेशन टेकअप करेंगे। तो ये सेशन को लेके किसी का क्वेरी है, कोई डाउट है, क्वेश्चन है, कुछ तो पूछ सकते हैं प्लीज़। तो अगर कोई क्वेरी आप, या तो आपके पास हो सकता है कि माइक्रोफोन ही ना हो अपना क्वेरी रेज करने के लिए, तो आप ये चैट बॉक्स में भी जो है आप टाइप कर सकते हैं, हम लोग यहाँ से भी पढ़ लेंगे। हाँ जी, हेलो। प्लीज़ बताइए। गुड जी मॉर्निंग जी। सर। सर गुड एक मॉर्निंग। कौन बोल सर रहे एक हैं पहले? सर मैं सुमित कुशवाहा हूँ, कोशिश अच्छा, सर। हाँ जी हाँ जी। सर मैं लेट ज्वाइन किया था सर, तो एक स्लाइड सर जिसमें लिखा है पैडी जो है ना, पैडी का एवरेज डेल्टा, सर वो हम्म एवरेज डेल्टा हम्म। क्या? अ, आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आई, पर इतना समझ में आया कि आप पैडी डेल्टा के बारे में पूछ रहे हैं। यस सर, वो डेल्टा मतलब हम्म। के जहाँ मीट होता है उस जगह डेल्टा बनता है, उस टाइप का क्या डेल्टा है सर? डेल्टा जी वो डेप्थ होती है पानी की, जो कोई भी अच्छा। क्रॉप आप जैसे उगाना चाह रहे हैं फार्म में, तो उस क्रॉप को ग्रो करने के लिए इरिगेशन वाटर की रिक्वायरमेंट रहेगी, पानी जरूरत रहेगा। तो उसकी पूरी ग्रोथ साइकिल में क्रॉप की, उसकी फर्स्ट वाटरिंग से लेकर के लास्ट वाटरिंग तक, टोटल कितनी डेप्थ आपने अप्लाई की पानी की। मान लीजिए फर्स्ट ओके। वाटरिंग में आपने 100 mm पानी अप्लाई किया, देन सब्सिक्वेंट वाटरिंग में आपने 100-150 mm अप्लाई किया, तो टोटल ऐसे डेप्थ आप ऐड करते जाइए। तो टोटल डेप्थ ऑफ वाटर पूरे ग्रोथ सीजन में कितनी अप्लाई करी आपने सेम पैडी के लिए, वो उसका डेल्टा हो जाता है। तो हमने इंडिया में जो देखा है कि हम लोग जो पैडी के लिए डेल्टा जो इस्तेमाल करते हैं वो ऑलमोस्ट 980 mm है, जो वर्ल्ड एवरेज से कहीं ज्यादा है। ठीक है। और ओके सर। स्पेसिफिकली पैडी की बात हम लोगों ने इसलिए की है क्योंकि पैडी एक ऐसा क्रॉप है जिसे हम वाटर गजलर की तरह बोलते हैं इंडिया में। क्योंकि पैडी हमारे जो है ओनली 25% ऑफ एग्रीकल्चर एरिया पे ग्रो किया जाता है
लेकिन पैडी जो है हमारा ऑलमोस्ट 50% ऑफ टोटल इरिगेशन जो वाटर है वो कंज्यूम करता है। ठीक है, तो ओनली 1/4 ऑफ एरिया एंड हाफ ऑफ द वाटर कंजम्पशन इन इरिगेशन इज कंज्यूम्ड बाय पैडी। तो इसलिए उसे वाटर गजलर भी बोलते हैं। हालांकि ओके। इसमें ऐसा नहीं है कि क्रॉप की रिक्वायरमेंट है कि उसे स्टैंडिंग वाटर चाहिए, लेकिन एक्चुअल में कितना चाहिए और कब चाहिए ये हमें जानना बहुत जरूरी है। और फार्मर्स के पास इतना नॉलेज नहीं होता है कि कब वाटर अप्लाई करना है, वो अपने एक्सपीरियंस से चलता है। तो यूजुअली फार्मर जो है वो वाटर जो है खड़ा स्टैंडिंग वाटर रखते हैं फील्ड्स में, जिससे लॉसेस काफी हाई होते हैं। ठीक है। ओके सर, थैंक ठीक है, और कोई डाउट किसी को पूछना है? Hello, sir. हाँ जी, विनीत। Sir, what is the difference between irrigation potential and irrigation intensity? इरिगेशन पोटेंशियल, देखिए इरिगेशन पोटेंशियल मैंने अपनी साइड में बताया। जैसे आपने एक प्रोजेक्ट से जो है आपने राबी सीजन में जो है मान लीजिए 50 हेक्टेयर इरिगेशन किया और खरीफ सीजन में जो है 100 हेक्टेयर इरिगेशन किया, तो टोटल कर दीजिए 100 हेक्टेयर प्लस 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 50 हेक्टेयर, 150 हेक्टेयर इरिगेशन किया आपने सेम प्रोजेक्ट से एक साल के अंदर, तो उसका इरिगेशन पोटेंशियल हो जाएगा 150 हेक्टेयर। और मान लीजिए आपका टोटल कमांड एरिया 100 हेक्टेयर था उस प्रोजेक्ट में। ठीक है, कमांड Yes, एरिया sir. 100 हेक्टेयर था, खरीफ में आपने पूरे इरिगेट किया, राबी में आधा इरिगेट किया, तो आपका टोटल इरिगेशन पोटेंशियल हो गया 150 हेक्टेयर, लेकिन आपका कमांड एरिया था 100 हेक्टेयर। तो आपकी इरिगेशन इंटेंसिटी होती है 150 हेक्टेयर डिवाइडेड बाय 100 हेक्टेयर, यानी 1.5। मतलब कि टोटल एरिया आपने इरिगेट किया सारे सीजन मिला के कितना इरिगेट हुआ, डिवाइडेड बाय आपका कमांड एरिया कितना है। तो आपका 100 हेक्टेयर कमांड एरिया था, 150 हेक्टेयर आपने इरिगेट किया पूरे साल में, तो 150/100 1.5 इज द इरिगेशन इंटेंसिटी इन दिस केस। अगर मान लीजिए 200 हेक्टेयर होता तो इरिगेशन इंटेंसिटी 200 हो जाती। 100 हेक्टेयर को आपने कंप्लीट कंप्लीट 2 बार इरिगेट किया, खरीफ में भी पूरा इरिगेट किया, राबी में पूरा इरिगेट किया, तो इरिगेशन इंटेंसिटी डबल हो जाती है 2 टाइम्स। ठीक है, समझ में Okay, आया? sir. Yes, sir. ठीक है, और कोई क्वेश्चन किसी का? देन आई होप कि अगर और कोई क्वेश्चन नहीं है तो वी कैन क्लोज दिस सेशन एंड वी विल मीट अगेन एट 11:30। सो एक चैट बॉक्स में मेरे पास आया है कि लो वाटर यूज एफिशिएंसी मींस एज आई अंडरस्टूड अ पैडी शुड बी प्रोड्यूस 10 टन पर हेक्टेयर बट ओनली प्रोड्यूस 3.6 टन। देखिए वाटर यूज एफिशिएंसी की जो हम बात कर रहे हैं फिलहाल, तो एक्चुअल में पानी हम लोगों ने कितना डैम से रिलीज किया कोई भी क्रॉप के लिए, और एक्चुअली में क्रॉप ने कितना यूटिलाइज किया फॉर इट्स एक्चुअल ग्रोथ, वो जो रेशियो है उसकी बात हमने की है। 36% है कि डैम से हमने मान लीजिए आपका 100 लीटर पानी छोड़ा था और क्रॉप ने यूज किया उसमें से केवल 40 लीटर, तो आपकी वाटर यूज एफिशिएंसी हुई 40/100, 40/100 यानी 40% ओनली। तो वो स्टडी एक सीडब्ल्यूसी ने की गई थी जिसमें पता लगा कि हमारी वाटर यूज एफिशिएंसी जो है वो केवल 36% ही है। ठीक है, जब 3.6 टन पर हेक्टेयर की बात करते हैं, ये एक्चुअली हम लोग लैंड प्रोडक्टिविटी की बात कर रहे हैं। हम लोगों ने देखा है इंडिया में जो हम लोग 1 हेक्टेयर जो फार्म है उसमें अगर हम पैडी लगाते हैं तो हमारा जो प्रोड्यूस है ऑन एवरेज 3.6 टन ही होता है। 3.6 टन पैडी जो है हम प्रोड्यूस ले पा रहे हैं 1 हेक्टेयर से, जबकि वहीं जो ग्लोबल एवरेज है वो इससे ज्यादा है। वी आर एबल टू गेट अ प्रोड्यूस ऑफ 4.5 टन पर हेक्टेयर जो ग्लोबल एवरेज है, पर इंडिया में ग्लोबल एवरेज के कंपैरिजन में हम लोग पीछे हैं। हमारा पर यूनिट एरिया जो क्रॉप प्रोड्यूस है वो कम है, उसका उतना ही मतलब था कहने का।